engagement with Iran. Pakistan has repeatedly called for restraint by all sides and stated that the dialogue remains the only viable solution to prevent a regional conflict. And in the similar vein of our advocacy for dialogue and diplomacy, on 18th July, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar spoke with the Kuwaiti Foreign Minister, Sheikh Jarrah Al Sabah, on regional developments, emphasizing de-escalation, respect for sovereignty, and implementation of the Islamabad MOU. Both sides agreed to remain in contact. Yesterday in Manila, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar met with the Egyptian Minister for Foreign Affairs, Immigration and Expatriates, Dr. Badr Abdul Ateh. This was on the sidelines of the ASEAN Regional Forum, and I'll explain about the ASEAN Regional Forum in a little while. But let me focus on this important meeting between Pakistan and Egypt's foreign ministers. The two leaders reviewed developments in the Middle East and underscored the importance of de-escalation and dialogue, while emphasizing respect for sovereignty and territorial integrity of all states. They also discussed the broader implication of regional instability, particularly for global maritime trade, energy security, and world economy. In Manila, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister also held a very important meeting with the Foreign Minister of Oman, Sayyid Badr Abdul Hamad Al Busaidi. The two leaders exchanged views on the latest regional and national developments. The Omani Foreign Minister appreciated Pakistan's constructive role in promoting dialogue, de-escalation, and regional peace and security. Both sides expressed concern over the recent developments in the region, stressed the importance of upholding ceasefire, respect for international law, and working towards lasting peace and stability. The outreach of the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, ladies and gentlemen, will continue in Bishkek, where he will be arriving today, inshallah, to lead the Pakistan delegation to this High Council of Foreign Affairs, CFM, the Council for Foreign Affairs, Foreign Ministers. This is the Shanghai platform for the member states' foreign ministers meeting. He will be in Kyrgyz Republic from 23rd to 24th July. I think we are about to issue or probably have issued a curtain raiser on this. And please do issue if it's not been issued. Let me state that during his visit, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, will call on the President of Kyrgyz Republic and hold a number of bilateral meetings with his counterparts from SCO member states on the sideline of the CFM meeting. Before being in Bishkek, the Deputy Prime Minister, as I said, is in Manila, where he reached yesterday to lead Pakistan's delegation at the 33rd ASEAN Regional Forum, ARF, ministerial meeting. Pakistan is an ARF member since 2004. We remain committed to promoting regional peace, stability, and cooperation through dialogue, and we remain a partner of ASEAN towards such endeavors. On the sideline, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, is holding bilateral meetings with the Philippine counterparts and other participating dignitaries. We have been updating you about these meetings, and please do follow our timelines for more such updates, because the Foreign Minister is holding these meetings as we speak in Manila. Yesterday, an important meeting was held in Manila between the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, with the Foreign Minister of the Russian Federation, Mr. Sergei Lavrov. The two leaders reviewed the full spectrum of Pakistan-Russia bilateral relations and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in a wide variety of subjects: trade, energy, connectivity, and other key areas, as well as enhancing coordination in multilateral forums. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister also met Mr. Khalilur Rahman, the Foreign Minister of Bangladesh, and the President-elect of the 81st General Assembly of the United Nations. He will assume charge, I believe, in August or September this year.
as the President of the General Assembly. The Deputy Prime Minister, while in Manila, also visited the headquarters of the Asian Development Bank, where he met the Director General for Central and West Asia, Mr. Lie Gorez. They discussed the bank's development agenda and its partnership with Pakistan, and appreciated valuable contribution of Pakistani professionals, a number of them who are serving at the Asian Development Bank. Ladies and gentlemen, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar was in Shanghai earlier this week, last weekend on 16-17 July, to attend the signing ceremony of the establishing World Artificial Intelligence Cooperation Organization, the WICO. The initiative aims to strengthen international cooperation on intelligence governance, research, and capacity building. As a founding member of Pakistan, of WICO, we became the founding member by virtue of Deputy Prime Minister's presence in Shanghai. So as a founding members, Pakistan look forward to enhance international cooperation on artificial intelligence, particularly South-South cooperation to harness artificial intelligence-related technology for sustainable economic development. While in Shanghai, ladies and gentlemen, the Deputy Prime Minister also met with the Chinese Foreign Minister, Mr. Wang Yi. The two leaders discussed the implementation of CPEC, regional connectivity, SCO cooperation, trade, and Pakistan-China strategic partnership. They also reaffirmed Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership through a multifaceted sectoral cooperation. Ladies and gentlemen, you are aware Canada's Foreign Minister Her Excellency Anita Anand paid an official visit to Pakistan on 20th July 2026. This was the first visit by the Canadian Foreign Minister to Pakistan in the last 20 years. She met the Deputy Prime Minister, Foreign Minister here in the Ministry of Foreign Affairs, where official delegation level talks were held, and also met our Prime Minister. Both sides discussed bilateral trade, bilateral relations, trade, investment, regional and global developments, climate cooperation, and people-to-people contacts. Pakistan and Canada also signed a protocol on phytosanitary import requirements for genetically modified canola intended for food, feed, and processing, facilitating agricultural trade between the two countries. They also agreed to expand cooperation in trade, investment, security, development, reaffirming their commitment to institutionalizing the bilateral engagement. With these remarks, ladies and gentlemen, I conclude my opening statement, and I would be ready to take question answers. Zishan. Thank you, spokesperson. Many questions, but I'll ask this time just one. The European Union has published 5th GSP report. Generally, it's positive for Pakistan, but it also identifies several areas where European Union has expects further reforms from Pakistan. So your comment on it. Thank you. The European Commission has published its biannual GSP monitoring review report for 2023-25. This is a biannual cycle. The overall report covers 60 beneficiary countries. As part of this overall report, the Commission has published individual country assessment reports as well, including one on Pakistan that you mentioned. The assessment is the final monitoring report under the current GSP Plus framework on Pakistan's compliance with the 27 international conventions. So it's the final report, the last of such series. We appreciate the assessment report's acknowledgement of Pakistan's legislative progress during the reporting period and the country's continued compliance with the 27 international conventions. Nevertheless, I would be remiss if I do not express disappointment with the with the report's overall narrative, which does not present a sufficiently balanced picture of Pakistan's performance, understates
the breadth of reforms undertaken since Pakistan joined GSP Plus in 2014 and places disproportionate emphasis on the lower than desirable level of progress in certain areas, few areas. GSP Plus remains central to Pakistan's economic relationship with the European Union, supporting exports, employment, women's economic participation, poverty reduction, and broader economic development. It is a mutually beneficial arrangement in that respect. Beyond GSP, Pakistan's EU cooperation extends to development, migration, counterterrorism, regional stability, resilience, climate resilience, connectivity, and many other areas. We will remain constructively engaged with the European Commission and other EU institutions and remain committed to the effective implementation of international conventions underpinning the GSP framework. Anas? Thank you so much, spokesperson. The Amnesty International has yesterday published a report on the strikes by Pakistan in Kabul and the alleged one on, as they said, on a hospital of sorts, without much new evidence. What is Pakistan's response on the matter? Yes, this report was published and we have seen the report. We completely reject the allegations made by Amnesty International. It is unfortunate that such serious allegations have been presented without any credible evidence. The Taliban regime continues to maintain a permissive environment for a range of terrorist organizations, including Tehreek-e-Taliban Pakistan, the Balochistan Liberation Army, and other affiliates. The freedom to undertake terrorist activities allowed to these listed organizations, their access to bases and sanctuaries on Afghan soil, as well as ability to recruit, finance, and execute cross-border attack, constitutes a serious threat to regional peace and security. Thousands of innocent Pakistani citizens have been martyred and injured because of Pakistan's terrorist attacks, which have been planned, financed, supported, and carried out from Afghan soil, all under the watch and patronage of active facilitation by the Taliban regime. No responsible state can remain passive when its civilians and security forces are repeatedly targeted. Any military strikes by Pakistan were undertaken in exercise of its right to self-defense under principles of necessity and as a measure of last resort, and directed only and exclusively, and let me repeat, directed only and exclusively against terrorists and their logistical support bases in Afghanistan. Pakistan's response was proportionate to the level of threat, while strictly adhering to the principle of distinction and precaution and proportionality. The scale and scope of this action reflected restraint, particularly in light of the severity and frequency of terrorist attacks faced by Pakistan. Pakistan rejects any insinuation in this regard otherwise. Pakistan calls upon the Amnesty International and the international community at large to direct rigorous scrutiny towards the Taliban regime's continued patronage of terrorist groups. The root causes that this report to address the root causes that this Amnesty International report has conspicuously failed to address. We also urge the international community to hold the Afghan Taliban regime accountable for its failure to uphold its obligations under the relevant United Nations Security Council resolution, its own commitment under the Doha Agreement, and other related commitments to prevent Afghan soil from being used as a launchpad for terrorism. Pakistan reserves the right to take all necessary measures in order to safeguard its sovereignty, territorial integrity, and safety and security of its people. I thank you. पाकिस्तान अपने लोगों के हिफाजत और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए
दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी, मनाज़र आप देख सकते हैं इस वक्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मुल्की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती को हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। खबर दें आपको, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मनीला में हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जाम जायज़ा लिया। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक ने खेलों के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने अवामी रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम की खराबी हल करने में नाकाम। संजय साधवानी तफसीलात से आगाह करेंगे। संजय, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा रेवेन्यू का जो अमला है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सिंध ने इसकी जो खराबी हुई इस मामले का नोटिस लिया था। उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और झूठा ये दावा किया गया कि जो ग्लिच आया था उसे ख़त्म कर दिया गया और सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। लेकिन आज जब फिर महकमा रेवेन्यू के ऑफिस में जब शहरी पहुंचे हैं तो उन्हें उसी जो मुश्किलात है सामना करना पड़ रहा है। 3 रोज गुजर गए हैं, महकमा रेवेन्यू का अमला जो सिस्टम की खराबी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर में वो हल नहीं कर सका है। सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केसेस जो हैं वो रुल गए हैं। शहरी परेशान है क्योंकि जो नो ड्यू सर्टिफिकेट का एक टाइम फ्रेम होता है, अगर उस दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो नया सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है। तो शहरी इसलिए भी परेशान है कि 3 रोज से जिन लोगों की तारीख तयशुदा थी, सौदे तयशुदा थे, बैंक के मार्गेज अफसरान से टाइम लिया गया था, वो अफसरान जब जो है वो महकमा रेवेन्यू के अफसरान में ऑफिस में पहुंचे हैं जहां पर ये फाइल ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो वहां उन्हें ये बताया गया है कि अब तक सिस्टम जो है वो फाल नहीं हुआ है। इस सिस्टम में आप अगर वीडियो में देख सकते हो तो ऑनलाइन जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जब तक आपका चालान डाउनलोड नहीं होगा तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो खास तौर पर क्लिफ्टन और डिफेंस के जो चालान हैं वो उस वेबसाइट में आ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से सैकड़ों जो सौदे हैं वो रुके हुए हैं। और महकमा रेवेन्यू की जानिब से गुज़िश्ता रोज सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी जो है वो गलत मालूमात फराहम की गई। वज़ीर सिंध की नोटिस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करके ये दावा किया गया कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है, लेकिन ये दावा भी झूठ पर मबनी था और ये दावा भी गलत निकला है। क्योंकि आज जब शहरी सुबह महकमा रेवेन्यू के ऑफिस गए हैं तो उन्हें वही परेशानी का सामना करना पड़ा है जो गुज़िश्ता 3 रोज से शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए संजय। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ना बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब में पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपी को मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए हैं। मरीम नवाज़ ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान, रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नौजवानों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। उज़्मा बुखारी ने कहा, पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। हम चाहते हैं जैसी तरक्की और खुशहाली पंजाब में है ऐसी सिंध में भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। आप एक जमात के चेयरमैन हैं, अपने ओहदे का ख्याल करें। सिंध में तर्जुमानों की फ़ौज क्या पंजाब पर गुस्सा निकालने के लिए रखी हुई है? सिंध के तर्जुमानों ने कभी हमें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी क्यों नहीं बताई? आपकी कारकर्दगी इतनी काबिल रश्क होती तो सिंध वाले मरीम नवाज़ के वज़ीर आला सिंध बनने की दुआ न मांगते। Margala Orchard Walk by DHA Islamabad.
पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। और अच्छी खबर यह है कि दुनिया अमन की तरफ बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया एक तीसरी जंगे अजीम के दाने पे पहुंच चुकी हुई थी। हमारी जो लीडरशिप है सिविल की और मिलिट्री की दोनों काबिल सताइश है। 2022 से लेके अब तक 5 बजट खसारे में। मैं तो रोज रोना यही रो रहा हूँ कि लोगों की बुरी हालत है, उसका कुछ सोचें। अभी NFC वाला जो हिकअप है वो भी जब खत्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। सियासी तकसीम भी है, ये भी एक हकीकत है। तहरीके इंसाफ ना 3 में न 13 में। भाई 4 साल से ज्यादा वक्त तो आपको हो गया, कोई एक कारकर्दगी दिखा दें। देखिए दी रिपोर्टर्स पीरता जुमा शाम 7:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है उसको हम इसको लेवरेज कैसे करें और सिक्योर कैसे रखें। कामरान, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो इस वक्त हमारा एनर्जी क्राइसिस है, हाउ ग्रेव इज दिस। या आप आज पैसे बना लें या आप रिफॉर्म करें, ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा और आपको मुस्तकिल हल मिलेगा। लेकिन ये जो नया इशू आया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। So Strait of Hormuz is not the cause of the conflict, it is a consequence. पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात हो, हमारा एक्सेस जो है वो सेंट्रल एशिया को जो है वो रिस्टोर हो। पहले उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, बिकॉज ये उनके इंटरेस्ट में है। सदर हैं अमेरिका के, अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो जाहिर है यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं आ रहे। वो वाला प्रेशर तो अब नहीं रहेगा कि इन्फ्लेशन एकदम बढ़ेगी, शायद जरूरत ना पेश आए। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ मंडे टू फ्राइडे 8:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। पार्ले 24K गोल्ड क्लीन ब्यूटी फेस वॉश 24K गोल्ड के साथ। पार्ले 24K गोल्ड क्लीन ब्यूटी फेस वॉश, मेरा रॉयल ग्लो।